Harvey, Tarun, Abu, Kashish, Anima, Vishu, please turn on your cameras. Who is being Janu? It's a kind of fancy name. Who is being Janu? Do you want to spell out your real name, or shall we will have to remove you out of the training session? Being Janu, can we know your real name? So you will have to use the unmute button. Thank you, Harvey. Thank you so much. Okay, we have Sampada as well. So Sampada requesting you as well to turn on camera. Again, Tarun, Kashish, Abu, uh, being Janu, no responses yet. Okay, no worries. So yeah, thank you guys. Thank you so much for the support. So we have Mr. Ashok today with us to begin this session with. So we will initially be discussing the possible careers in Salesforce, what Salesforce is also all about, the basics of Salesforce, and then we'll begin with the kind of small activity on the live platform of Salesforce. So Ashok will be taking you through this session. So hi Ashok, can you quickly introduce yourself and then we can take it from others one by one, right? Thank you so Yeah, much. sure. Thank you, Sachin. Yeah, as you know, my name is Ashok, and I'm into development and training for a long time. I've got 20 plus years of experience, and for last 4 years, I'm into Salesforce and Salesforce training. So I'm certified professional, and I'll be taking you through this demo. Yeah, I hope I'm audible. Yes, Ashok, you're audible. So we can begin with the introductions now, right? So let us have each of the attendee to introduce themselves, as I have already introduced myself. Sir, this side Vishu Garg, and basically I am BTech Mechanical Engineering 2015 to 19 batch, and presently working as a quality engineer, but trying to change from a mechanical to IT background. That's why today I am here in this Salesforce training program. Okay, okay. Hello everyone, I am Anima from Bhopal and I am a BTech graduate, a 2022 pass out from Ellen City, Bhopal. I'm a fresher and I want to learn Salesforce and to have a niche in the technical field. Therefore, I'm here. Thank you. Abu Sufyan, can you hear me? Yeah, being Janu. You guys are on mute. Unmute yourself first and then start introducing yourself. No problem, Abu Sufyan. Being Janu. मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay, no problem. Harinder. Yes. Yes, sir. Yeah, please.
Hello everyone, my name is Harvinder and I just heard about the Salesforce. That's why I joined this session to know about what is Salesforce and how we can make our career in this field. So you are into IT, or how did you heard about Salesforce? Yes, I have education. I have done MSc IT, but I don't have any experience in this field. Okay, I think it's gonna be a good start. Thank you so much. Yeah, Sampada. Hi everyone, this is Sampada here. I just have worked on Salesforce for some time in my organization, but Great. that was really basic what I was working on. So I wanted to explore more in Salesforce and now take up my career in Salesforce in future. So that is the reason I thought this course or this would help me, learn about it in a better way. Surely. Yeah. Yeah. Tarun. Yeah, thank you so much. Tarun this side, born in Delhi, and I have done BCom with computer application from Delhi University, and I am working in IT field last 1 year. And I choose Salesforce because seeing this booming in Salesforce in market, that's why I'm choosing Salesforce, and I want to build my career in Salesforce as well. Thanks. Good. Good. Yeah, Vishu. Yeah, go ahead, Vishu. Sir, as I already informed, is it I should have to discuss it again? No, no, no. If you have already done, then it is not required. Okay, Yeah, sir. UD. UD Patil. Hi, sir. Umesh. My name is Umesh. Okay. Yeah, I have completed like my BCA, sir, in Mhm. 2022. Okay. And after that, like I didn't work anywhere. And yeah, I heard about like Salesforce and all from my friend. So Mhm. yes, I'm thinking to make like a career in Salesforce, sir. Okay. Good. So, some of you might have heard about Salesforce CRM, right? From your friends or say internet, right? Yes, sir. Right. Right. Okay. So let me start sharing my screen and please confirm if it is shared. Yeah, just a second. I hope it is shared now. Yes, Ashok, the screen is visible. Yeah. Thank you for the confirmation. Okay. Let us start with CRM. Do you know what is CRM? Or have you heard this term before? It's Yeah. customer related relationship management. Good. Great. So what does it do? Do you have any idea what is CRM and how it works? No. No idea. Any of you? Sir, as we are getting by the term client relationship management, Mhm. so basically what I'm getting is that the process or the term through which how we can make the client relationship better or how we can implement it in an industry. Okay. That's Yeah, that is also a part of CRM. That is just one part, not the, I mean, complete thing about the CRM. Yeah. Anyone else having an idea about CRM? Yes, sir. Like in CRM, we can manage like data and all. Uh, we can add records, I guess. We can add means like it's help to add the data. We can manage like some business part like by that data and all through CRM. Right. So it is about data also, maintaining the data.
And let me give you a precise information what type of data it is going to maintain. It is going to maintain the sales and service related information, right? Yes, sir. Yeah. Anyone else? So it is a technology used by any kind of business or organization, Yes. large scale and small scale. Good. It is used this CRM also, and uh, mm, yeah, that's why. Okay. Now, as you said, the very first person who introduced says that it is customer relationship management. It is used to maintain a good relationship with our customers, right? Yes, yes, sir. So let us suppose I'm a new company or say a production company which is recently formed, and I'm a manufacturer company, and say I'm manufacturing some product, say laptop or anything, say mobile, right? How will I get customers? What do I need to do in order to get customers? Can you give me an idea? Advertising So or marketing, sales. marketing. So first of all, I have to market. I have to do marketing. Very good. Yes, yes, sir. Okay, let us suppose I've started marketing. What will happen then? So like B2C companies जैसे marketing करती हैं business to business. ठीक है, business to business. And Okay. once we start marketing, we'll be Mhm. getting clients who are using our products or our services. So basically, after it, Mhm. we'll be setting up relationship between them and storing the data on databases. Okay. So this is the case when a company who's already selling the products and having a customer base or client base, right? Yes, yes, sir. Okay. That is also good. But as I said, that I'm a new company, newly established company, so I have to do marketing in order to get customers. Let us suppose marketing campaigns have been started, right? So what will be the result of those marketing campaigns? Mm. From its completes from that marketing. I've started, started showing ads on television, YouTube. I've done marketing campaign on various social networks. So what will be the outcome of that marketing campaign? So gain more informations. Information of whom? Yes, I mean, about sir. whom? Means, uh, mm, So gain एक तरह clients से to Right. So I'll get Getting relevant information. audience. Sorry. I'll get the information of the customers or the persons who are interested in my product or services, right? Yes, So sir. you might have seen various ads on Facebook, right? When you click on that particular ad, a form opens. It asks you to enter your name, email ID, right? yes, And other information. Once this information is entered, right, this goes somewhere to the advertiser or not? Yes, so sure. please repeat again. See, that information which you entered in that form, right? Yes, Say I saw an ad on Facebook. I clicked on that ad, and a form opens. I entered all my information like my name, my telephone number, my email ID, right? yes, yes, sir. And that information will go to the advertiser, Advertiser. isn't it? Yes, sir. So this information, collective information, is stored somewhere, which, just a second, sorry, sorry, which the advertiser has access to, right? Just a second, guys. Just a second. Now, what that advertiser can do is can share the data with the sales team, right? Now, the main task of the marketing team is to obtain or to get the list of potential customers, right? Yes.
those potential customers are called leads in this terminology. Okay. So all these leads are shared with the sales team. Now, what is the role of the sales team? Tell me. Sir, firstly, the sales team get to information that what the client basically needs, that what is the need of our product. Okay. So basically, sales team contacts the customer, first of all, Yes, either through email or through directly call, and that information is maintained somewhere, isn't it? Yes, yes, sir. sir. Yes. Now, once that potential lead is okay to buy the product, what happens next? It is a complete cycle. Yes, sir. What happens next? Sorry, sir. Can you repeat, please? See, once the potential customer is okay to buy a product or service, Okay. right? He or she shows the interest in the product or the service. What is the next step? Sir, then what I think as a customer is a comparison. Comparison, demonstration. You may need more Sir, product related varieties. information. The varieties. Lots Yeah. of varieties. So you may want to ask about the color options or say varieties in general term, right? And Yes. sir, quantities and qualities also. The Right. customer check. Once everything is I mean properly conveyed, then you may buy the product, right? Once Yes. you buy the product, you become the customer. This is what happens. Yes, sir. Yes. Now, since you became a customer, what should be done to maintain a good relationship with you as a customer? Mhm. What are the further steps which make you loyal to that product? Sir, as in today's time that everything is to be updated. Everyone needs the thing to be updated on time to time. So I think that customer will we should get to in contact with the customer that for Okay, the let us update. let us make it precise. Say you bought a mobile, right? I'm a Yes. mobile manufacturer company. You saw my ad, right? A lead was generated, right? So you visited my website, you entered all your information. My sales team contacted you and convinced you to buy a particular model as per your requirement, say camera or whatever that specification may be, right? Whatever your requirement may be. Based on your requirements, we suggested you a phone and you purchased that phone. Yes. So now you become a customer, Yes, Yes. sir. right? Now, how we can make you a loyal customer so that next time whenever you are going to buy a phone, that should be our phone or the same brand phone. Yes, sir. By Through providing servicing service as in. as sir, as in time like phone as you have taken the example of phone itself, Mhm. as phone damage, so it needs service itself. So that should be Okay, provided in a time that a on time. customer basically demands. And so Okay. customer check all specifications like Spec- RAM, ROM, and camera, that and has already been done. and That has version already also. been done. See, we suggested your particular phone as per your requirement or specifications. Yes, yes, sir. So based on that, you purchase the product. Now that person is saying that, uh, let us suppose my phone breaks down. Its screen is broken, say. So he needs the services or the service center within the range. It should be near around, right? Just a second. Yes, sir. So it should be near your home or your office, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if it is near, there shouldn't be any queue. I mean, long queue. You don't have to keep waiting, like, right? And Yes. the replacement part should be affordable. And in most cases, if I'm replacing the phone, then
I think this will make our relationship good. Next time, probably you're gonna prefer buying my product or say phone, isn't it? Surely, sir, surely. So this entire cycle is nothing but the CRM, customer relationship management. But what happens is usually those organizations which are not using CRM, what they Yes, do is their marketing department is separate, sales department is separate, and service department is separate. They yes, sir. don't interact with each other, right? So Yes, the sir. information which you provided initially when you saw that ad, right, is shared with the sales team only. Sorry. Uh, okay. So that is shared with the sales team. But when you are getting your product serviced, if you find any bug or say error or say it is broken down and it requires any service, then you need to share that information again, isn't it? That is because the company which is asking the information again means they are not using a CRM tool. Okay. So what Yes, sir. basically CRM does is it integrates all these three modules. Which three modules? Sales, marketing, service, and Service. sales. See. So once the information is entered, it is shared with all the teams. Okay. Okay, sir. Okay, sir. And each and every person has full details, a 360-degree view of our customer. Okay, Right? okay. Right, sir. Okay, सर let us. सर Yeah, 360 डिग्री कैसे है एक बार 360-degree ऐसे say, let us suppose you saw my product on. Just a second. I need a few seconds, please. ओके सर Okay. See, 360-degree essay. Okay, let us suppose I have showcased my products on an e-commerce site like Amazon, right? यस सर यस सर So what you did was you searched a smartphone or say as a camera phone, यस right? सर राइट And you found various products and you clicked on one particular product. Now what it does is it shows you the recommendation. It shares the recommendation on the bottom of the page if you have ever noticed. यस सर कभी नोटिस किया आपने recommendations आते हैं Amazon की वेबसाइट पर नीचे यस यस सर based on what product you have chosen, based on what specification you have selected, यस सर and price range also. यस यस So it shows all those products which matches those properties or say criterias, right? राइट Yes. सर So it is basically capturing your interactions. Okay. ओके So based on that, it starts at that place only. I mean, this is the very first place where it starts capturing your information, your interactions. ओके ओके सर Okay. So it gives every department a 360-degree view. कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया, क्या आप कैमरा देख रहे थे, क्या सीपीयू देख रहे थे उसमें, राइट? आपकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी बेस्ड ऑन दैट. ओके ओके सर गॉट इट Okay, so that Yes. information is shared with all the departments. ओके ओके सर Okay, so that way it is 360-degree. Okay, let us see what CRM is. I hope you all are, I mean, well aware with the term called CRM, Customer Relationship Management. Yes, Yes, Right? sir. sir. Yeah. If you have any doubt, query, or question, you can ask. No, sir. No, sir. Okay, good. So CRM stands for Customer Relationship Management, and it's a software that stores customer contact information. Now you know how. Basically, marketing team does this, isn't it? यस सर Yes. So contact information like name, address, and phone numbers, as well as keeps tracks of customer activities like website visits, phone calls, emails, and more, as I just said. Right? So this is the basically business cycle. In order to get customers, you have to start a marketing campaign. Once the marketing campaign is started,
you will start getting the customer information, potential customer information that is shared with the sales team. Now, sales team calls those potential leads or potential customers, those who are, ready to buy, Yes, right? sir. They become our customers. After buying the product, they may get a feedback form. How did you like the product, or what else should be done to the product so it is more helpful, right? Yes, yes. So you become the customer. If you're facing any problem, then you go to support, and this cycle goes on, right? Right, sir. Likewise. So CRM basically integrates all these departments, right? So what CRM does? CRM facilitates the businesses to actively track and manage customer information. This is the first part. Secondly, it connects your entire team from any device. When I'm saying any device, means it can be a mobile. Say a salesperson can connect with the customer using mobile, a tab, right? A laptop. Okay. So it intelligently captures customer emails. How? It shows you the form where you enter all your details, right? A Yes, sir. CRM simplifies repetitive tasks so you can concentrate on leads. As a business owner, there might be some tasks which need to be done daily on the daily basis, right? So Yes. instead of doing them daily, what CRM can do is it basically offers some automation tools. Okay, Okay. using those automation tools, I can automate those repetitive tasks. So I don't have to do them again and again. That will be done automatically in the background. So as a salesperson, what I need to do is I need to concentrate on the leads. That's it. Yes, yes, sir. So it delivers instant insights and recommendations, as I just said with the example of Amazon, Yes, right? right. So extends and customizes as your business grows. Let us suppose I have chosen, I'm a new company and my customer base is very small, say, right? And since CRM tools are slightly costly, so what can happen is, say, since I'm a small business, there are chances that I may not invest on CRM, heavily. So there are some CRMs which are more economic. So I can initially buy the starter pack with the basic services. As my business grows, I can buy the extended version or the extended subscription. Okay. So you can see, we can start a campaign, right? This will generate leads. Leads can be converted into an opportunity. What is the difference between a lead and opportunity, guys? Lead is a potential customer who shows the interest. He may or may not buy the product, right? After interaction, he may deny that, no, I'm not interested in this product. I was looking something else, right? Or a lead may say, yes, this is the product which I was looking for. So if this lead confirms that it can be a customer, it becomes our opportunity. A सर quotation, a quote is shared, a सर person. लीड एक हाँ, बताइए. मिनट सर लीड तो हम कर रहे हैं ना क्लाइंट को हाँ, क्लाइंट को पोटेंशियल कस्टमर इज कॉल्ड अ लीड. यस यस तो सर मतलब Yeah. ओके ओके ठीक है ठीक है सर अपॉर्चुनिटीज भी तो हम ही देंगे कि आप ये वाला प्रोडक्ट्स बाय करिए नहीं, इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी बेसिकली वो लोग होते हैं, वो लीड्स होती हैं जो प्रोडक्ट को बाय करने में अपना इंटरेस्ट शो करती हैं. यस यस सर Those person, individuals or organizations are called opportunity. This opportunity here means a business opportunity, ओके ओके right? राइट राइट So those leads who shows interest become business opportunity or opportunity in short. We Yes. share quotations, right? If they are okay with the quotations, then purchase order is generated, sale order, delivery, invoice, and then campaign, and this cycle goes on endlessly. सर कोर्ट में हम उन्हें समझाएंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में
नहीं, कोर्ट में हम उनको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसी रेट पर है, ये वारंटी है, राइट। ओके ओके, मतलब पूरा ये सर बेसिकली एक तरह नेगोशिएशन, से डिटेल देना है कि मतलब राइट। प्रोडक्ट कंप्लीट डिटेल हम उन्हें क्लाइंट को प्रोसेस कर रहे हैं। कोई भी सेल करने से पहले हम कोटेशन मंगाते हैं ना, कोट दो, यस यस सर। कितनी वारंटी होगी, वो सब क्या रहेगा, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कोर्ट में होती है या कोटेशन में होती है। ओके सर। ये बेसिकली निगोशिएशन राउंड होता है यहाँ पर। अगर कस्टमर कहता है नहीं मुझे 6 महीने का नहीं और वारंटी चाहिए, या इतने प्राइस में नहीं उतने प्राइस में चाहिए, आप वारंटी कम कर लो, प्राइस अच्छा चाहिए, दिस इज बेसिकली निगोशिएशन राउंड। सर इफ इट इज बट बी टू बी, इफ इट इज बी टू बी, सर जैसे हमने कोई प्रोडक्ट रेडी कर दिया, उस पर तो एक वारंटी हमारी सेट होके आती है, तो फिर क्लाइंट हमसे इस चीज का इशू कैसे कर सकता है कि हम वारंटी चेंज कर दें उस प्रोडक्ट की? बी टू बी से आई एम अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, मैंने कहा कि जो मैं वारंटी दूंगा आपको 1 साल का दूंगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यस सर। जब आपने खरीदा। लेट अस सपोज यू आर अ रीसेलर, आप मेरे से खरीद कर खुद तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, नहीं नहीं सर। यू आर सेलिंग इट फर्दर। ओके। तो आप कहते हैं कि नहीं मेरे को आपसे जो खरीदा उस डेट से वारंटी स्टार्ट नहीं चाहिए, जिस डेट पर मैं इनवॉइस जनरेट करूंगा या करूंगी उस डेट से चाहिए। यस सो यस। सच काइंड ऑफ negotiations कैन हैपन हियर एट दिस राउंड। हाउ इट इज क्लियर नाउ? Yes, basically. ओके सर। Okay. ओके। Yeah. Fine. So why CRM matters? CRM helps you ditch clunky processes and manual efforts, so you can get on with business. You will find more leads, close more leads, keep more customers, and grow your business. This is what every business goal says, right? यही रहता है ना हर एक बिजनेस का गोल कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, राइट? Yes, yes, So sir. a CRM is basically one place to store all customer information, means your conversations are always personal. अब it means say मेरा interaction हुआ, I'm a sales guy, right? I interacted with one of you, say one of you, that person can be X or Y. Yeah, go ahead if you have any query. सर एक क्वेरी है जो आपने पीछे बताया था, उसका कोट और इनवॉइस का। सर तो इनवॉइस में कस्टमर हमको क्या नाम है प्रोडक्ट का वो भी देगा रिव्यू? हाँ, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन। ओके। See, if the deal is basically B2B, not B2C. अगर B2B है, ठीक है, मुझे लगता है आप रीसेलर हैं, आप मेरी बहुत सारी सेल जनरेट कर सकते हैं, तो yes obviously I'll give you a demonstration, एक डेमो प्रोडक्ट भी दे सकते हैं उस केस में। That ओके basically varies business to business. ओके ओके। नहीं सर, जैसे आपने बताया था ना कि मतलब क्लाइंट हमारे सामने जैसे वारंटी का इशू रख रहा है, तो मेरे को लगा कि फिर वो इनवॉइस हमारे लिए इश्यूज के लिए है, मतलब कोई रिव्यू नहीं है इस चीज में। मतलब जैसे हम रिव्यू करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमने इसको Well, यूज किया that is after the product is delivered. It is not delivered yet. Delivery stage यहाँ पर है, देखिए। है। ओके ओके सर, पर इनवॉइस तो फिर हमारी पहले आनी चाहिए ना सर, डिलीवरी तो बाद में होनी चाहिए या नहीं? देखिए, पहले परचेज ऑर्डर होता है। इफ यू एवर बीन इनटू, देखो परचेज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने कंफर्मेशन दे दिया कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है। यस सर। तो इट इज काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट विच शोज योर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट और द सर्विस। यस सर। परचेज ऑर्डर मिलने के बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट को स्टॉक, इधर से स्टॉक से निकलवाएंगे, पैकिंग करवाएंगे, राइट, सेल ऑर्डर जनरेट करेंगे। इफ सेल ऑर्डर इज अग्रीड, यस सर। जो अमाउंट है उसके ऊपर मैंने दिया आपको, हाँ हाँ। आप उसे अगर साइन करके मेरे को देते हैं, यस। देन प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, राइट, अलोंग विद द इनवॉइस। ओके 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 सर। यस सर, यस सर। Okay. Yeah. So basically CRM is one place to store all customer information, means your conversations are always personal. अब ये पर्सनल कैसे है conversations? से मैंने आप में से किसी एक को कॉल किया, राइट, एंड यू सेड राइट नाउ आई एम इन ऑफिस। जैसा भी आप में से किसी एक ने कहा था कि मैं ऑफिस में कैमरा ऑन नहीं कर सकता, से वन ऑफ यू वर इन ऑफिस एंड यू सेड दैट टुमारो इज हॉलीडे, राइट, आई विल बी able to, I mean, interact on Sunday only, right? यस सर। तो अब क्योंकि वो इंटरेक्शन मैं एज अ सेल्स पर्सन मेरा हुआ है उस एक्स पर्सन के साथ, तो मैं ये कमेंट में ऐड कर दूंगा, राइट,
let us suppose tomorrow I'm on leave. तो any person who will be working on my behalf, जब वो CRM डैशबोर्ड को ओपन करेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि ये कस्टमर को मुझे संडे को कॉल करना था, क्योंकि संडे को इस पर्सन का ऑफ होता है। यस सर। और जब कॉल किया था तब क्यों नहीं किया? बिकॉज ही वॉज इन ऑफिस। अब मुझे उस पर्सन को, जो मेरे बिहाफ पर जो काम कर रहा है, एम्प्लॉय एज सेल्स पर्सन, वो दोबारा आपसे नहीं पूछेगा कोई भी इंफॉर्मेशन। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज देयर। सर रिपीट अगेन प्लीज। Say you are a salesperson. Let us suppose you are a salesperson. Yes sir. Right? You called me up and I was in my office. Yes. आपका मेरा इंटरेक्शन, मैंने कहा अभी right now I'm in office, I cannot talk now. Please call me tomorrow, as tomorrow is Sunday and it will be my off. Yes sir. ठीक है, मेरा हॉलीडे रहेगा कल। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन, जो मेरा स्टेटमेंट है, ये आप उसमें लॉग कर सकते हैं सीआरएम टूल में, डैशबोर्ड में। ओके, आपने वहां पर लिख लिया, सेव कर लिया, राइट? ओके। आप लेट अस सपोज आप संडे को आपका भी हॉलीडे है, लेट अस सपोज। एक तरह से रिमाइंडर का वर्क करेगा क्या हमारे लिए? सॉरी, कुड यू रिपीट? सर ये जो आपने बताया कि हमने सीआरएम में अपना ऐड कर लिया कि हमारा क्लाइंट संडे में फ्री है तो हम उससे संडे में टॉक करेंगे, तो एक तरह से हमारा रिमाइंडर का वर्क कर रहा है ना? सिंपल वे में मैं बोल, आपने एक टास्क क्रिएट किया कि इनको मुझे कल कॉल करना है, एक टास्क क्रिएट किया, राइट? यस यस सर। अब लेट अस सपोज संडे को आपका ऑफ है। यस सर। तो एनी पर्सन, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका ऑफ है तो पूरा मतलब सेल्स टीम का ऑफ है, तो आपकी जगह पर, आपके डेस्क पर कोई और काम करेगा संडे को। यस। तो जो आपके डेस्क पर काम करेगा वो लॉग इन करेगा सिस्टम में, तो वो देखेगा कि ये इंटरेक्शन हुआ था, अशोक ने बोला था कि मैं संडे को फ्री होऊंगा, संडे को 5 बजे प्लीज मुझे कॉल कीजिए। यस सर। राइट। तो ये इंटरेक्शन कन्वे करने की जरूरत तो नहीं है ना। आप जब छुट्टी लेने से पहले आप किसी को कन्वे तो नहीं कर रहे ना यार, ऐसे ऐसे हर एक लीड का डेटा तो आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, राइट? राइट सर। So everything, each and every information is there on the dashboard. Yes sir. Getting it? So your conversations are always personal, ठीक है, relevant and up to date. अब जो भी आपके बिहाफ पर काम करेगा वो मुझे कॉल करेगा कि आपकी कल जिनसे बात हुई थी वो आज ऑफ पर हैं, तो आपने आज फोन करने के लिए कहा था, तो बताइए। यस सर। ठीक है, तो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। Each and every information is written there. That is why it is called customer 360. Customer 360, right? तो कस्टमर का 360 डिग्री इंफॉर्मेशन वो मेंटेन करता है। यस सर। ओके, सो Salesforce customers report 26% more deals. अब क्यों होती है more deals? क्योंकि देखो ये जो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी पड़ रही है, this saves a lot of time. Yes sir. Right? You are interacting with the customer and updating the CRM dashboard accordingly. Okay. So it says 26% happier customers, 32% more leads for those who are using CRM. Okay. sir. Okay. तो इसमें कस्टमर हमसे ये नहीं बोल सकता कि हमें तो अजय सर से ही बात करनी है, तब हमने उनको ही बोला था। नहीं, तो दैट पर्सन में से आई एम हिज मैनेजर स्पीकिंग। यस सर। ठीक है, तो उस केस में तो आप मैनेजर से ही बात करना पसंद करेंगे? नहीं सर, चलो उस केस में मैनेजर से करेंगे। बाय चांस मैनेजर नहीं हुए, कोई एम्प्लॉय हुआ, तो उस वजह उस केस में क्या होगा? अगर कस्टमर ने कह दिया कि भाई हमारी तो अजय से ही बात होगी। हाँ ठीक है, तो अजय ठीक को है, ही ठीक है। देखो उसमें यू मे से कि ही इज ऑन लीव टुडे, राइट? संडे इज हिज ऑफ, सो आई एम वर्किंग ऑन हिज बिहाफ, राइट? आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, मतलब उन्हीं से बात करना, तो आई कैन शेड्यूल ए कॉल ऑन मंडे, बट मंडे विल बी योर ऑफिस। आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि मंडे को फिर आपका ऑफिस होगा, आप बात नहीं करेंगे, राइट? यस यस सर। ओके, यस सर। Okay, since we are talking about Salesforce, and Salesforce is CRM tool which is cloud based. CRM क्या है? क्लाउड बेस्ड है। तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है नहीं पता है, तो लेट अस हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग गाइस? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? Although it is written on the screen. Cloud computing. Saving all the information of the customer on a cloud.
Okay. that can be accessed from the remote. I mean, anytime it can be accessed through cloud. Okay. It will have permanent, Then storage of. my question is, what is the difference between cloud and non-cloud systems? Sir, in non-cloud system, basically the data which is stored is in your storage only. Okay, Actually, good. means it will store your ROM data present in your system. So But you in have cloud asked the computing, difference it is between stored on cloud and. internet itself. It Right. does not store your physical memory or that the system exists. It is on Exactly. internet itself. You can download it from anytime, anywhere, at any place. Right. Right. Good. या आप पूछिए, सवाल पूछ रहे थे आप बीच में. या सर मैं यही पूछ रही थी कि आपने क्लाउड और किसके बीच में डिफरेंस पूछा नॉन था. क्लाउड सिस्टम्स. नॉन क्लाउड. ओके 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 सर. Okay. See, cloud means that we are using an application, right, that is delivered over internet. Can you give an example of any cloud based application or cloud computing? टेलीग्राम. Telegram. But in order to use Telegram, you must have that application installed on your system or say on your mobile, isn't it? No sir, we can use Telegram web through websites. I mean, Telegram web is there, similar Right. to WhatsApp web. Right. The Telegram web is there. Good. But can you create your account using Telegram web? We have to link our Existing account. account. Yes. In order to create an account, you must have Telegram installed on your mobile device. Am I right? Yes sir. Yes. So we can say partially a few services, except few services, Telegram is cloud-based system basically. कुछ exceptions है उसमें, right? Like account creation cannot be done over internet. Yes, sir. You must have that application installed on your mobile device. Mobile device. Okay. So apart from Telegram, बाकी लोग भी रिप्लाई करें यार. Sir, can we take an idea of Google Drive too? वेरी गुड, वेरी गुड. गूगल ड्राइव. अच्छा, गूगल ड्राइव कैसे है बताइए. Sir, basically, as we store the data in it, and it does not store our phone or chip data. Basically, Exactly. it is stored on internet itself. That's on your ID. We can download it on laptop or mobile whenever we need. Exactly. So a very good example is Google Drive, right? We don't have to download the Google Drive in our system. If you are using Gmail in your mobile phone, if you get any link, that can directly be stored on the Google Drive, right? Yes, You sir. can upload data on the Google Drive. So when I'm saying Google Drive is cloud computing, means it is not using the resources of either your laptop or handheld device. जो resources use हो रहे हैं वो किसके use हो रहे हैं? Google Internet. Remote location पर, Remote. right? जो Yes. cloud provider है उसके use हो रहे हैं. Yes, Okay. sir. So no hardware, no software. 100% true नहीं है, no hardware, no software, because you must have a device which is having a browser installed. At least you require a device which is having a browser. Minimum requirement is a device which is capable to execute a web browser. This is the minimal requirement in order to access cloud-based services, right? Cloud computing applications are less expensive than desktop. Less expensive कैसे होती हैं? Can you tell me? Yeah. Guys. So we are able to get the data on our remote location. So हमें अलग अलग डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है. मतलब हम कहीं भी स्टोर कर रहे हैं तो वो हम एक्सेस तो कर पा रहे हैं. Exactly. लेकिन ये less expensive है than desktop software. कैसे?
Because sir, as I have given the as I have given the example of Google Drive, and if our data is already filled, then we should have to pay just to store the data what we need. We need to Not buy the hardware, basically, you mean to yes sir, say. yes sir. Not for just like as we are having suppose only 1 GB of data additional that we have to store. So Mhm. we should have to pay only for that, not for buying that Exactly. extraordinary. On demand, you mean to say. Yes sir. Okay, exactly. See, cloud computing mein what happens is you pay on the basis of your usage, as you pay for your electricity and water, right? Now let us consider मुझे MS Office चाहिए. I need to buy the software and a license, then I'll install it on my system. There are some limitations and advantages. Advantage is that I have purchased a particular version, right? And I'll be getting all the updates for that particular version, right? But if the version changes, say I have purchased 2016 MS Office 2016, so I'll be getting all the updates of MS Office 2016. लेकिन limitation क्या है कि I can use that software on my desktop or laptop where it is installed only, isn't Yes. it? On the Yes. other hand, if I'm using Office 360, Office 365, which is cloud based, right? I don't have to buy the software. I have to pay very less amount as compared to the one where I was buying that. I was buying the license for that, right? तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मोर इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू द फिजिकल आई मीन यूसेज इन माय लैपटॉप. मैं उसे वर्चुअली यूज कर सकता हूँ रिमोटली, राइट? हाउ इट इज क्लियर? Secondly, we don't have to install it, configure it, and maintain it. Do we need to install Google Drive or Gmail? No, we don't have to, isn't it? Yes sir. Yes sir. We don't have to download, install, configure, and maintain Gmail. What we need to do is just type in gmail.com, press enter, type in your credentials, enter your credentials, and you are ready to use your Gmail account. So this is a cloud computing example. So it is effectively infinite in size, so you don't need to worry about it running out of capacity, right? तो डिलीवरी मॉडल्स कौन कौन से हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के? द डिलीवरी मॉडल्स आर software as a service. You can buy a software as a service, a platform as a service, and infrastructure as a service. Can you tell me what is the difference between these three? What is infrastructure, platform, and a software? Any idea, guys? What is infrastructure? Platform as in, I think, the standard for delivery of the software. Right. In which platform the software is being delivered? Not actually delivered. The Being delivery model developed. is software as a service, basically. Okay. So Platform. Yeah. infrastructure is hosted in a data center on site. Infrastructure is nothing but a hardware. Okay. It is part. the physical structure. Exactly, the hardware part. Is the So this is the base model. क्योंकि हर एक जगह पर हार्डवेयर तो चाहिए ही हमें, isn't it? Yes, sir. Let us suppose you want to buy a laptop, i5 laptop. So what is that? Infrastructure. When you are saying i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, all these are nothing but the infrastructure, the hardware part. So instead of buying that physically, you can buy them virtually. Virtually means over the internet. तो ये तो बेनिफिट्स हो गए ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, जो आपने अभी बताया था एक तरह से बेनिफिट्स. जैसे आपने अभी इसका लैपटॉप का एग्जांपल लिया था इसमें. हाँ, ये बेनिफिट भी हो सकता है. देखिए, मेरा जो अगर से
मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ इंस्टेड ऑफ बाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। Yes, sir. तो बेनिफिट ये है कि आई कैन कैरी इट एनीवेयर, राइट। Yes, sir. Yes. लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज टू बी फुली चार्ज्ड if Yes, I'm sir. using it while on run or say on mobile, right? Right. Yeah, right. Right. चार्ज होना चाहिए, इंटरनेट रहना चाहिए मेरे पास, Yes, बैकअप sir. रहना चाहिए, राइट। एंड उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी मुझे बेयर करना पड़ेगा, Right, right, sir. और उसके डैमेज भी हो सकता है, इट मे गेट इन्फेक्टेड। तो दीज आर द लिमिटेशंस। एडवांटेज क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का, कि लेट अस सपोज मैं अमेजोन के पास गया, AWS अमेजोन वेब सर्विसेज, I created an account and I selected all the hardware, right, Right, sir. which I was looking for a laptop. वही हार्डवेयर मैंने वहां पर सिलेक्ट कर लिया AWS में, Okay. से i5 प्रोसेसर, 16 GB RAM, 512 GB of storage, right? So I what Amazon did was they rented out the hardware to me and I'll be paying them as per the usage. से मैंने उसे अगर 3 घंटे यूज किया है तो I'll be paying for those 3 hours, right, for which I've used that hardware. Getting me or not? भाई आपके पास आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे समझिए कि लेट अस सपोज यू हैव गॉट एन अपार्टमेंट, राइट। तो अपार्टमेंट खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इजंट इट? Yes, sir. वही अपार्टमेंट अगर मैं रेंट आउट कर दूं या कोई जो रेंट पर लेगा उसे, तो क्या उसे उतने ही पैसे देने पड़ते हैं? No, sir. से मैंने एक अपार्टमेंट लिया 1 CR का, ठीक है, लेकिन उसका रेंट मेरे पास आ रहा है 25,000। Yes. तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता 1 CR को, वो क्या करेगा, रेंट पर रहेगा, इजंट इट? Yes, sir. ठीक है। तो अब वो कब तक उसकी पेमेंट देगा, एज लॉन्ग एज ही इज यूजिंग माय अपार्टमेंट और नॉट। Similarly, you contacted Amazon, you entered all your configuration, you selected the configuration, and you will be paying for them for the usage. If you are not using that, you will not be paying them. ठीक है, जितना आप यूज करेंगे उतना ही पेमेंट आप करेंगे। Which is more sensible option? Tell me. Whenever we use paying is a sensible option. So, when say say I'm a builder, ठीक है, तो आई कैन बाय एज मेनी फ्लैट्स और से अपार्टमेंट्स बिकॉज आई एम द बिल्डर, ठीक है, मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी है और उतना मेरे पास कैपेसिटी है, राइट। बट थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वेरी स्मॉल, राइट, वो क्या करेंगे, ऑफिस रेंट पर लेंगे। सिमिलरली, इफ यू वांट टू बाय अ सर्वर व्हिच इज कॉस्टली एनफ, then what you can do is instead of buying the hardware, you can go with the infrastructure as a service, right? There are many companies who rent out the hardware. The leader in those is Amazon Web Service. Another one is Microsoft. There are a number of other players as well, okay. Alibaba is also there. So number of players are there which provide you the infrastructure or the hardware on rent. I hope it is clear now. What is infrastructure as a service? Guys, Yes, sir. just a second. Yes, sir. Yes, sir. Just a second, guys. Okay, sir. Okay. I'll be back in a moment. Sir, Guys, you can take a 5 minutes break. Then we'll continue this session from the same point. oh, okay, sir. Okay, sir. Na 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 na.
Na 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 na. Uppal. Ashok sir, Okay. I have asked the students to take a 5 minutes break, then continue. Okay. Okay.
Can we start, guys? Can we start, guys? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. I hope what actually infrastructure is clear now. Yes, sir. Yes, sir. So infrastructure is nothing but the hardware, right? Okay, sir. से मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई एंड सर्वर चाहिए, राइट? तो आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर बाय दैट सर्वर फिजिकली, which might be very costly, right? And the other option is, which is more economical, is infrastructure as a service. Yes, sir. Okay, so then let us suppose I have purchased a server, right? I have installed an operating system. That operating system can be anything like Linux, Mac OS, or Windows, or Unix, whatever it may be, right? And on the top of that operating system, I have installed some development tools as well, like a programming language and database. So that is called a platform. I mean, an environment using which I can develop an application. एक ऐसा environment जिसको use करके मैं खुद की एक application बना पाऊँ. ठीक है, that is called a platform. सर बट यहाँ पे तो थर्ड पार्टी भी तो इन्वॉल्व होएगी हमारी. Third party as in? सर एज इन मीन्स जैसे आपने अभी बताया ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ भी हम अपना कोई ऐप बना रहे हैं, तो उस चीज में थर्ड पार्टी का भी तो इन्वॉल्वमेंट होएगा, मतलब उनसे हेल्प लेने के लिए. देखो, व्हेन आई एम सेइंग के आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन और मेरे पास डेवलपर्स हैं, राइट? और डेवलपर्स को एक एनवायरनमेंट देना है. मैंने क्या एनवायरनमेंट देना है कि एक ऐसी मशीन देनी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो और डेवलपमेंट टूल्स भी इंस्टॉल हो. ठीक है, अगर वो डेवलपमेंट टूल्स यूज करेंगे तभी तो एप्लीकेशन बनाएंगे. गेटिंग मी? यस यस सर. सर मेरा कहने का मतलब ये था थर्ड पार्टी से ऐसे कि मतलब कि सर्वर जो हमारे होस्टेड होते हैं उस बेस पे कि मतलब सर्वर वगैरह देना उन्हें. I'll come to that. अभी तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ ना. We have two options. One is I buy the hardware physically. Okay. Again उसके limitations हैं कि I need to maintain the network. अगर एक मैंने सर्वर बना लिया से सेंट्रलाइज सर्वर जिसमें जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं या टर्मिनल्स है, ठीक है, मैंने क्या किया, लैन के थ्रू कुछ कंप्यूटर्स को उस सर्वर से कनेक्ट कर लिया, राइट? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, राइट? एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, मुझे पावर बैकअप चाहिए, राइट? और तो और उसका जो डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर स्टोर हो रही है उसका भी बैकअप चाहिए टाइम टू टाइम. यस सर. तो सर लिमिटेशंस है. सर ये काम तो कोई थर्ड पार्टी का ही होगा ना, मतलब कि जैसे आपने ऐप बनाया तो आपने एक काम मेरे नहीं, अभी ऐप नहीं बनाया, अभी मैं एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ऐप बनाने वाला. अच्छा, ओके, ठीक है, अभी मैंने एनवायरनमेंट नहीं बनाया है. अभी तो मेरे को मतलब ऐप नहीं बनाया, एनवायरनमेंट के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं. ओके ओके सर. आई शुड हैव अ प्लेटफॉर्म यूजिंग व्हिच आई कैन डेवलप एन एप्लीकेशन. भाई आप अगर मैं मान लेता हूं कि आप जावा डेवलपर है, तो कैन यू डेवलप एनी एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, विदाउट एनी लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन इट? देखो क्या क्या चाहिए बेसिकली. पहले तो एक हार्डवेयर चाहिए,
ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें पसंद आता है, राइट, या जो हमारे डेवलपमेंट को ज्यादा सूट करता है। उसके बाद वी इंस्टॉल जावा कंपाइलर ऑन इट, डेटाबेस टूल्स, राइट। अब our laptop is ready to develop any kind of application, right? Yeah. Sir. So Okay, this sir. laptop is called a platform as a service. I mean, the hardware, the infrastructure, which is having an OS installed, all the development tools installed, right, is called a platform as a service. This is the next level of service. Okay. और उसके भी ऊपर है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सी आई डोंट हैव एनी डेवलपर्स इन and I don't have any development capabilities, like I don't know any programming language, but still I want to use a social networking site like Facebook. तो उस केस में क्या मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लूंगा या प्लेटफॉर्म लूंगा या सॉफ्टवेयर लूंगा एज ए सर्विस, बताइए. So software. Software as a service, right? So you have three choices. If you have everything else ready, only the hardware part is required, right? उस बाकी सबके लिए रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो विल गो विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. Yes, sir. ठीक है. एंड आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लाइसेंस नहीं है. से आप एंटरप्राइज यूज कर रहे हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का और उसके लिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, और लेट अस अज्यूम दैट इट इज टू कॉस्टली. मैं व्हाट आई वांट इज आई वांट टू हैव अ सर्वर व्हिच शुड बी यूज्ड फॉर वेब होस्टिंग, राइट. वेब होस्टिंग वो सर्वर होता है जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर होती है. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक एंटरप्राइज लाइसेंस चाहिए, राइट, जो बहुत कॉस्टली होता है. इफ आई कैनॉट अफोर्ड दैट, in that case I can go with the platform as a service. I hope it is clear now, guys. Yes. ठीक है, I don't have developers. ठीक है, I don't have developers, I don't have infrastructure, I don't want to buy the enterprise OS license either. Then what I can do is I can go with the software as a service. For example, Gmail. अब आप इमेजिन कीजिए कि ईच एंड एवरी ऑफिस, राइट, जो कि खुद का अपना एक ईमेल सर्वर बना रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है, राइट. फिर उसको जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक वी एज आल्मामेट, अब हम उसको इनबाउंड और आउटबाउंड परमिशंस दे रहे हैं टीसीएस के लिए, विप्रो के लिए, फॉर विच वी यूजुअली कंडक्ट ट्रेनिंग्स. तो हम उनको परमिट कर रहे हैं, परमिशंस दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनका अपना एक ईमेल सर्वर है, विप्रो का अलग है, टीसीएस का अलग है, हम तीनों का आपस में इंटरेक्शन होता है. तो ईच विल बी परमिटिंग ईच कंपनी सेपरेटली, राइट. तो वहां पर देखिए कि ईमेल करने के लिए हम तीनों को सर्वर परचेज करना पड़ रहा है. ऑन द अदर हैंड इफ यू गो विद द गूगल, Yes, sir. तो इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. दे कैन डायरेक्टली गो फॉर द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Software. This saves a lot of cost and resources, isn't it? Guys, clear है ये, या कोई डाउट है Yes, इसमें? sir. Yes, sir. Clear है. Good. So a software as a service provides a facility to the user to use the software directly, software from anywhere with the help of an internet connection. It is also known as software on demand. Okay. तो अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर के ऊपर रन कर रहा होगा. तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसके नीचे ये दो लेयर अपने आप से हैं. If you are using software as a service, this includes both platform as a service as well as infrastructure as a service. क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है किसी हार्डवेयर के ऊपर रन कर रहा है, हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली रन नहीं करता है. इट रिक्वायर्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो. ओके. So Yes, when sir. I'm saying software as a service, this includes both platform as a service as well as infrastructure as a service. But when I'm saying platform as a service, this includes platform as a service means the operating system as well as the hardware. Okay. What is platform as a service? So platform as a service helps the user by providing the facility to make, publish
and customize the software in hosted environment. What do you mean by hosted environment? मतलब जो भी आप डेवलप कर रहे हैं ना, मेक कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, वो अपने लोकल सिस्टम के ऊपर नहीं कर रहे, वो आप रिमोट प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, राइट? Yes. See, your laptop may not be capable enough. Say an example can be कि जितनी भी हमारी एनिमेशन मूवीज बनती है, एनिमेटेड मूवीज, राइट? दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, राइट? तो उसके लिए क्या एवरी फिल्म मैन्युफैक्चरर बाइज अ पर्टिकुलर सर्वर? नो, they go with the platform as a service, right? They go with a platform which helps them create animations, okay? And they pay them as per their usage on demand, okay? They don't carry Okay. their hardware along. So, I hope it is clear now. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay, good. Now, what is infrastructure? So infrastructure is nothing but the hardware, as I have already told you. See, it uses IT hardware and softwares. Just by paying the basic price of it, the companies that use infrastructure as a service are IBM, Google, Amazon, right? Right, sir. And Alibaba also. There, the list goes long, but I have, kept only 3 major players. Okay. So with the help of visualization, the host can manage and create the infrastructure resources at the cloud. Means if you ever happen to create an account on AWS, you will find an interface where you are offered a particular CPU processor, right? You can select i5, i7, i3, number of cores also. Say you want 8 cores, 18 cores, or n number of cores, right? You can select the required number of cores, CPU cores. You can select required amount of RAM, required amount of storage. So this collectively is nothing but a machine, a computer, right? और अगर आपके पास लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडो, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं उसके ऊपर, एंड यू कैन एक्सेस दैट रिसोर्स, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोटली, ओके? सर प्लीज एक बार और समझा दीजिए जो कौन आप सा समझ में नहीं आया आपको? प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, सर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो आपने बोला था वही। अच्छा चलिए ठीक है, समझते हैं इसको। अब मान के चलते हैं कि आपके पास एक लो एंड मोबाइल है, ठीक है? बहुत पुराना, मतलब एक मोबाइल है जिसमें आप सिर्फ इंटरनेट ब्राउजर ही चला सकते हैं, राइट? और आपको चाहिए बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स, राइट? से इमेज एडिटिंग की फीचर चाहिए आपको, और एनिमेशन का फीचर चाहिए, बहुत अच्छा कैमरा चाहिए, राइट? लेकिन वो आपके फोन में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका लो कॉन्फ़िगरेशन फोन है। Yes, sir. लेकिन एक कंपनी आती है मार्केट में जो आपको ये सब चीजें ऑफर करती है, ठीक है? कैसे? कि आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर से एक वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जो जो फीचर्स आपको चाहिए वो फीचर्स आप यूज करेंगे। से आपको मूवी मेकिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप मोबाइल पर ही, मतलब अपने कैमरे से ही मूवी बना सके एनिमेटेड, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकें, राइट? यूजिंग योर ओन फोन, ठीक है? अब वो सब फीचर्स आपको कैसे मिल रही है? कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है। तो जो फीचर्स आपका मोबाइल का हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता, वो फीचर्स कोई और हार्डवेयर रिसोर्स, आपको वो हार्डवेयर रिसोर्स रिमोटली मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगी वो आपके अपने मोबाइल की लगेंगी, नहीं। वो जो थर्ड पार्टी है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट, उसका अपना हार्डवेयर रिसोर्सेज लगेगा। गेटिंग इट? सर मतलब वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो अपने प्लेटफॉर्म को तो आप सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि मैं एक ब्राउजर इसमें से यूज कर पाऊं और एक इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। बाकी जितना भी रिसोर्सेज यूज हो रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर का यूज हो रहा है। ओके ओके? यस सर। What is Salesforce? Salesforce is a CRM platform. प्लेटफॉर्म जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है?
I've already told you what is a platform. Platform is an environment which allows you to develop your own custom applications, right? So Salesforce is world's #1 CRM platform. When we say it is platform, इसका मतलब ये है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी खुद की एप्लीकेशन इसके ऊपर बना पाए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम योर कस्टम एप्लीकेशंस, ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एप्लीकेशंस भी आपको प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस है? लाइक सेल्स एप्लीकेशन, जितनी भी सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, they have already developed an application which are handled by this application. I'll show you. ठीक है? So it has one more application called service, marketing, commerce, Tableau, MuleSoft. All these are out of the box applications which no other CRM offers. Okay? So please repeat again. See, Salesforce क्या करता है आपको? ये out of the box applications का एक्सेस देता है। These are ready-made applications, standard applications, right? जब भी आप Salesforce का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी एप्लीकेशंस आपके पास आ जाती हैं बाय डिफॉल्ट। You don't have to develop a sales application, marketing application, service application. ठीक है भाई? अब मैं एक नया बिजनेस हूं, मुझे कल से ही अपनी सेल्स स्टार्ट करनी है, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है मैंने, तो वन सॉल्यूशन इज गो विद द Salesforce। क्योंकि Salesforce से क्या होगा कि Salesforce में पहले से ही एप्लीकेशंस है, सेल्स एप्लीकेशन है, सर्विस है, मार्केटिंग है, राइट? तो मुझे कस्टम एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पर चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे मैं अपने चेंजेस खुद कर सकता हूं। So Salesforce is world's #1 customer relationship management platform, which your marketing, sales, commerce, service, IT team works as one from anywhere. Means आपकी सेल्स टीम का है, से एक लोकेशन पर बैठी है, से एक्स लोकेशन पर। आपकी मार्केटिंग टीम फील्ड में है, ठीक है? आपकी सपोर्ट टीम जो है वो से यूपी किसी लोकेशन पर है। अब तीनों की लोकेशन डिफरेंट हो गई। तो विद द हेल्प ऑफ Salesforce, ठीक है, वो एक एज अ सिंगल टीम काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द Salesforce। ओके, सो दे आर वर्किंग एज वन टीम। या That means time consuming. टाइम कंज्यूमिंग कैसे होगा? देखिए, आप इंटरनेट के थ्रू एक एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं। Yes, sir. आप फील्ड के अंदर है, मार्केटिंग टीम, Yes. ठीक है? आप अपने मोबाइल डिवाइस से आप जो भी मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन Salesforce आपसे कैप्चर कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एट विच लोकेशन यू आर। Yes. सेल्स टीम किसी और लोकेशन पर है तो उसका जो भी कस्टमर से इंटरैक्शन हो रहा है वो स्टोर हो रहा है अगेन Salesforce में। Okay. ठीक है? और जो हमारी सपोर्ट की टीम है वो यूपी की किसी लोकेशन में है, से नोएडा में है, ठीक है? वो वहां से अपना सर्विस सेंटर चला रहे हैं या कॉल सेंटर चला रहे हैं, तो वो जो भी इंटरैक्शन कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो बीइंग स्टोर्ड इन द Salesforce। तो यानी जो Salesforce है वो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक एम्प्लॉई या हर एक डिपार्टमेंट हमारा कनेक्टेड है, तो दे ऑल आर वर्किंग एज अ सिंगल टीम। ओके, so all your customer related information is stored on the Salesforce। जो इंफॉर्मेशन मार्केटिंग वाले कैप्चर कर रहे हैं वो सेल्स वाले भी देख पा रहे हैं, मार्केटिंग वाले भी देख पा रहे हैं, सॉरी सपोर्ट वाले भी देख पा रहे हैं, राइट? और सपोर्ट वाले जिनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं कि उनकी जो क्वेरीज थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, वो सेल्स टीम के साथ भी शेयर हो रहा है और मार्केटिंग टीम के साथ भी शेयर हो रहा है, राइट? तो सर इसमें फिर आईटी का क्या काम चल रहा है? आईटी बेसिकली जब हम बात करते हैं कि आईटी टीम मतलब जो आपकी हार्डवेयर टीम है, यस सर। रिसोर्स टीम, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर कनेक्टेड है।
आईटी आप ये मान के चलिए कि आपने जो लैपटॉप लिए हुआ है, सर ठीक है, आपने अपनी सेल्स टीम को कुछ लैपटॉप्स दिए हुए हैं यस और कुछ वाईफाई राउटर्स दिए हुए हैं, यस ठीक है, तो उन सबको भी तो मैनेज करने के लिए आपको एक टीम चाहिए या नहीं? यस यस सर Okay. So Salesforce ranked number 1 9 consecutive year, पिछले 9 साल से ये नंबर 1 सीआरएम टूल है, ठीक है। तो गार्टनर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, सीआरएम प्लेटफॉर्म्स, उनको रैंकिंग देती है, राइट। एज यू कैन सी देयर आर वेरियस प्लेयर्स, हबस्पॉट, पेगा, शुगर सीआरएम, क्रिएट आईओ, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सेल्सफोर्स, ठीक है। तो आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं, राइट। तो सेल्सफोर्स इज लीडर इन सीआरएम 9th कंसेक्यूटिव ईयर, पिछले 9 साल से लगातार ये टॉप पर है, पोजीशन पर, राइट। तो अभी इस साल का डेटा आया नहीं है, वो मिड में आएगा, जून जुलाई के आसपास, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोबेबली इट इज रैंक्ड एज नंबर 1 10 consecutive years. Okay. Yes. So how Salesforce can help you as a business owner? अब हमें एक आइडिया तो हो चुका है यार कि हमारी जो सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है और जो सपोर्ट टीम है, वो सब एज अ सिंगल टीम काम कर सकते हैं. दे डोंट हैव टू इंटरैक्ट विद ईच अदर. ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड अमंग माय टीम्स implicitly. I mean, I don't have to put additional efforts in order to share the information with my rest of the departments. तो एक एंड से अगर इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है तो पूरी टीम के साथ वो शेयर हो रही है, राइट. सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, right? So you can connect to your customers in a whole new way, build more meaningful and lasting relationships, better understanding their needs, because every department knows what customer requires, right? Their needs, sorry. Identify new opportunities. When I'm saying opportunity means business opportunities to help. Address any problems faster. If existing customers are facing any problem, you can address that problem faster. Why faster? Because the moment a case is generated or problem is shared, it is shared with the support team. Okay. Yes. So you can address any problem faster and deploy customer focused apps lightning fast. With a single view of every customer interactions, you can sell, service, market like never before. I mean, there is only one dashboard, right, which is sharing all the information, the marketing team information, the sales team information, the support team information. We'll see that. Okay. सर डिप्लॉय कस्टमर कौन से होते हैं? डिप्लॉय कस्टमर डिप्लॉय करेंगे एप्लीकेशंस को. डिप्लॉय कस्टमर फोकस्ड एप्लीकेशंस लाइटनिंग फास्ट. जस्ट इन केस मेरे पास मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट का एप्लीकेशन है, राइट. मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, से खुद का एक कस्टम एप्लीकेशन बनाना है विच सेल्सफोर्स इज नॉट ऑफरिंग. तो व्हाट आई कैन डू इज यूजिंग सेल्सफोर्स आई कैन डेवलप माय ओन एप्लीकेशन आल्सो. मैं खुद की एप्लीकेशन बना सकता हूं और उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूं लाइटनिंग फास्ट within seconds. Okay. Okay. It is about deploying the So, application. एक तरह से लाइटनिंग हमारा सॉफ्टवेयर में आता है. लाइटनिंग बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है. और यहाँ पर जो लाइटनिंग फास्ट बोल रहा है तो मतलब ये बोल रहा है कि बहुत तेजी से, वो उस वाले लाइटनिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. Okay. So Salesforce brings companies and customers together. How? Salesforce unites your marketing, sales, commerce, service and IT teams from anywhere with Customer 360. One integrated CRM platform that powers the entire suite of connected applications. So with Customer 360, you can focus your employees, right? Yes. On what's important right now, stabilizing your business, reopening, and getting back to delivering exceptional customer experiences. अब इसका मतलब ये है कि अब अभी मेरे एम्प्लॉइज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं वो चेक करूं, बिजनेस को स्टेबलाइज करूं, ठीक है.
और जो लीड्स या जो मेरे केसेस क्लोज हो गए उनको ओपन कर सकते हैं, राइट। और फिर उन कस्टमर से हम कनेक्ट कर सकते हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। उनको कुछ हम फ्रीबीज दे सकते हैं, नंबर ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, लाइक फ्री अपडेट्स दे सकते हैं, राइट। Right. In order to have exceptional customer experience piece, to get their loyalty, right? Yes, sir. What is Salesforce used for? Attract more buyers using personalized marketing, win more customers by getting to know their needs and concerns, deliver the amazing shopping experiences your customers expect, respond faster to customer support issues on any channel. When I'm saying any channel, मतलब चाहे तो कस्टमर ने मेरे से किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड ईमेल किया हो, कॉल किया हो, चैट के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन दियो, प्रोडक्ट रिलेटेड जो माल फंक्शनिंग है उसकी, ठीक है। तो मैं कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कर पाऊं रिगार्डलेस ऑफ किस चैनल से उसने मुझे कांटेक्ट किया है। और कौन कौन से ये टच पॉइंट्स हैं, चैनल्स बताइए? कॉल, ईमेल और चैट, व्हाट्सएप, राइट। Automate time consuming tasks by building custom applications. So you can build your own applications, right? Lightning fast, बहुत जल्दी से, बहुत quickly. Why? Because application को डेवलप करने के लिए आपको जो environment चाहिए, जो information चाहिए, that is already available. So what are the career options? Probably you must be waiting for this, right? Yes, sir. कौन होता है Salesforce एडमिनिस्ट्रेटर? नाम से बताइए। As the name suggests, administrator. Any idea, guys? तो जो एडमिनिस्ट्रेट करता होगा सेल्सफोर्स को, वो Exactly. See, Salesforce में क्या होता है, when you register yourself as a CRM customer, ठीक है, या Salesforce के कस्टमर, तो ये आपका एक ऑर्ग क्रिएट कर देता है, एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है। विल सी दैट इन अ शॉर्ट व्हाइल, राइट। तो उस एनवायरमेंट में उसको जो एडमिनिस्टर करेगा कि मतलब कौन से यूजर को क्या क्या परमिशन देनी है, कौन सा यूजर क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता है, राइट। बेसिकली administrator is basically is responsible to correctly set up any organization, right. It is responsible to assign the roles of each and every employee, right. Responsibility is hierarchy, right. And it is also responsible to develop the custom applications. So basically administrator is a person who may or may not know the programming, but still can develop an application using point and click tools. यानी कि Salesforce जो होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, वो हमारे लिए एप्लीकेशन बना सकता है रिगार्डलेस ऑफ उसको प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती है। ओके सर, ठीक है। तो देयर आर सम टूल्स व्हिच इज कॉल्ड declarative approach या point and click approach using which we can create, मतलब ड्रैग ड्रॉप करके हम अपनी खुद की एप्लीकेशन बना सकते हैं। If I know how to develop an application, custom application, I can be a good administrator, right? Right. So who's Salesforce developer? Tell me. तो जो वेब डेवलप करते होंगे वो, देखिए, जिनको प्रोग्रामिंग स्किल्स जिनके अच्छे हैं, जिनको प्रोग्रामिंग आती है, यहाँ पर मैं आपको मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ डेवलपर, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि आप डेवलपर नहीं है और आपको स्क्रैच से प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। बट दोज हु ऑलरेडी नो द प्रोग्रामिंग कैन बी अ गुड डेवलपर विदाउट लर्निंग द प्रोग्रामिंग स्किल्स। लेकिन जिसके पास नहीं है तो फर्स्ट दे नीड टू लर्न द प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड दे कैन बी अ डेवलपर। सो वी कवर दैट प्रोग्रामिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आल्सो। So crack the code on tricky problem. Right. So he should the developer should be able to configure the organization, right? Develop the application using Apex, flows, triggers. I mean, some coding part. Yes, yes, sir. So who's business analyst, guys? तो जो बिजनेस को एनालिस्ट करता है कि कितना Sir, improve business.
to improve जिसके पास business process and बहुत सारा efficiency. डेटा है, and with the help of that data, that person can forecast future sales, right? Analyze कर सके कि मैं कितनी सेल्स जनरेट कर सकता हूँ, कितना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, कितनी मार्केटिंग कर सकता हूँ, या कितना बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ, So इसमें बेस्ड ऑन दी इम्प्रूवमेंट का भी तो ऑप्शन आ सकता है कि हम अपने बिजनेस को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं. exactly. So we have marketing careers, those who are good in marketing. This marketing can be, say, field marketing, email marketing. There are various forms of marketing. So those who are good in marketing, right, can go with the marketing careers. Sales careers mein, the salesperson is basically responsible to generate the leads, business, right? Basically, the person who can generate the business can go with the sales career, right? Then we have service career. If your communication skills are good, you can be a service support person, right? ओके सर. If you are good in UI means जिनको वेब डेवलपमेंट आता है, यूजर एक्सपीरियंस बना सकते हैं, ऐसे जावास्क्रिप्ट आता है बहुत अच्छे से, दे कैन गो विद द Salesforce designer, right? So architect is a person who is responsible to run a smooth ecosystem. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उनको पहले से ही इनकाउंटर करके उनके उनके लिए कोड लिखे, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. Okay, and a consultant is a person who can interact with the customer, gather all his requirements, and develop the solution for that organization with whom he is interacting. Yeah. सर एक क्वेश्चन पूछूंगा था. अब पूछिए. सर जैसे कि जब कोर्स शुरू होगा, ये जो सर तो जब कोर्स शुरू होगा इसका, तो सर जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है तो वो तो बेसिक से शुरू कराया जाएगा ना कोर्स, बिल्कुल बेसिक. कोर्स बेसिक से ही शुरू होगा, चाहे आपके पास आईटी बैकग्राउंड है या नहीं है. आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी जो इसमें चाहिए, चाहे आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स पहले से हैं या नहीं है. ठीक है. So this course covers everything from the scratch. सर जैसे अगर 3 साल का गैप है तो हमको फिर जैसे हम कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने, तो हमको पहले एक्सपीरियंस लेटर बनवाना पड़ेगा, रेडी करवाना पड़ेगा उसके लिए. देखो, बेसिकली इट वेरीज, राइट? अभी तो क्या चल रहा है, अभी करंट सिनेरियो इज के सेल्सफोर्स के जो डेवलपर्स हैं उनकी शॉर्टेज है मार्केट में, राइट? लेकिन अगर बाय द टाइम यू आर फिनिशिंग योर कोर्स, उस समय अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, यस सर, दिस हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट सेइंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इट बेसिकली वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंडली रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा, राइट? तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट बेसिकली कि उस समय क्या रहेगा. लेकिन अभी एज ऑफ नाउ, इफ देयर इज अ गैप बट यू आर technically sound and you can crack any technical interview, then you can be a developer or say administrator, right? सर एक क्वेश्चन और है. regardless of this gap. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए कौन सा इसमें से करना चाहिए, ओनली सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर या पूरा का पूरा जो मास्टर इसका प्रोग्राम है? देखिए, आप सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 साल के बाद आपको लगेगा कि थोड़ा सा सैचुरेशन आ गया है, राइट? और ग्रोथ नहीं हो रहा है आपका. ओके, सो फॉर बेटर ग्रोथ आई सजेस्ट यू गो विद द सेल्सफोर्स डेवलपर प्रोग्राम. ओके सर, ओके सर ये फुल प्रोग्राम कितना टाइम ड्यूरेशन का है? देखिए, आप इसे मान के चलिए कि इट इज अराउंड 2.5 month. बेसिकली इट इज 45 वर्किंग डेज. हमारा जो 5 days अ वीक रहता है, राइट? तो ऑलमोस्ट 2 months जाता है, 2.5. सर सेशंस लाइव लेने में ज्यादा, प्लीज आस्क वन एट अ टाइम. या जो एक सेशन होता है वो कितने आवर का होता है फिर? 4 hours का, जिसमें फर्स्ट इनिशियल 2 hours के बाद एक ब्रेक होता है 10-15 minutes का. उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. सर लाइव की टाइमिंग क्या है लाइव सेशन की? ये लाइव सेशंस ही होते हैं, मतलब अभी ऑफलाइन नहीं चल रहा है, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है. नहीं सर, आई मीन कि
एक ऑनलाइन क्लासेस और एक रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी अगर हम वर्किंग है? मैं जी ऑनलाइन सर। क्लासेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, you want to have the recorded lecture? Sir, as actually I am a working candidate, then what should I have to do? Because I can't attend live classes at that time. So you can enroll yourself for the same program. What you can do is, instead of attending the lectures, you can go Yes, through the Ashok. recordings. Ashok, one Yeah. one minute. Okay, means recording should be available to us. Yes, recording will be available with you. That Okay. will So be guys, shared with you. we actually have two models available for people who can be available in weekdays. So weekdays we have two timings available. We do training in two slots. 9:30 to 1:30 is the first slot, and second slot is 2 p.m. to 6 p.m. So this is for the people who can attend the live training, and in the same model we have available in a blended model. So what is blended model? Blended model training is nothing but you get the recording of on a daily basis from the live parallel batch that is going on that month, and the flexibility is that you can book a live class with the trainer every Saturday. So that is a live support available. Everything will remain same. The course content, projects, assessments, placement support, everything will be there. The only difference will be you will have to take it through the recorded sessions, and you can book a live class with the trainer every Saturday in the week, right? And the And access for the content in blended model is for 4 months. okay. And And sir, so what when about is the a new batch starting? I mean, 16th of January, but blended model can be started any point of time. okay, sir. Yes. and sir, what about certification? As there are four modules, so should we get the certification for each module, or should we get just after The completion of the entire? more the most common certification required in the industry is platform developer one certification. Every provided support, if you want to go for the certification, Almamate will be providing you the assistance in that as well. Okay, okay, okay. Not such certification will be provided from Elma. Almamate will provide you the professional training certificate, but there is a global training certificate as well. Okay, Global certificate is from the salesforce.com, for which you have to take an independent exam with Salesforce only. okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes. And so the placements will be scheduled from which month after the training? So the training is divided into four modules: programming fundamentals, admin, developer, and Lightning Web Components. After each module, you are required to take an assessment, submit a project, and attend a mock interview. So the combination of all three module all of four modules, you should be able to attain 70% of score after each module, after the completion of each module. Post which we help you with the placement assistance, where we schedule your profile with several clients across India, and then basis on your performance in the interview, you get the selection done. So the interview process is going to start only when you have completed the training with the right scores at Almami. And sir, is this interview process is both in same in blended model as well as in live class, or there Yes, should be something difference in it? process is same. Okay, that means and the entire process should be same. Or only the thing is that we should get live in live classes, and in blended we should get recorded, isn't it, sir? Yes, in blended model, you will get the recording from the live batch only, but you will have to attend the assessments. You have to submit the project. You will have to attend the mock as well and clear them with the right scores. And you get the live support as well. Every Saturday, you can book a live class with the trainer. Okay, sir. Okay. Hello. Uh, Yes. yeah, I had a query. So currently, I'm working as a business analyst, Yes. but in a different platform. I work in Mhm. Java and Python. So I Mhm. wanted to switch my career into Salesforce. So which certification would help me switch my career? So there are two things involved. First, you will have to go through the Salesforce Administrator curriculum. The training will be for 15 to 17 days. If you go Okay. live or you go for the self-paced, both will be the same duration. And the preferred certification, you can either go for the Salesforce Business Analyst. There is a certification available, global Okay. certification.
and there is another certification which is Salesforce Administrator. So both can help you with the same position, getting the same position. Okay, all right. Yeah. So this will be an online exam, is it? Like if we are taking the Yes. certification. If you're booking a official certification with Salesforce, you get both the options. Either you can book it at any of the centers at Salesforce, or you can book at your own online platform available. But you should have the necessary components with you, like HD camera, smooth content, internet connection, and a laptop with a personal laptop, not a corporate laptop. So Okay, if okay, you have all these things, you can take the certification online as well. okay. Sir, will this training will be sufficient to clear the certification exams of the admin and developer? Yes, exactly. So the training is more than sufficient because we are not covering just the certification content. We are covering the project content as well, and we are covering the entire development, starting from basics to advanced modules available, right? So you will be able to clear the Salesforce admin, app builder, and platform developer one certification post this training. And apart from the training, we have a platform available where you do a lot of practice before going to the certification. So this platform has been specially designed for the people who want to take up the certification. And this platform already helped around 1,500 people taking certification in the last 2 years. Okay, sir. Yeah. Thank you. And sir, how we should get the information of assessment and all in recorded batch? So you will have access to our proactive LMS, which is Learning Management System. You will be getting all the updates there, and you will be added to a batch group where you will be in connect with the live batch as well. So you will be notified for everything, even task, even project. So everything will be uploaded on your LMS only on a lifetime basis only. Okay, okay, sir. Okay. Yeah. Sir, what is the full cost of the program? Full program? The live training is 40,000 rupees, including all taxes. The blended model is 20,000 plus 18% GST. Okay, sir. Okay. And sir, one more last thing that I was asking that if someone did not get the PDI one certificate that is from Salesforce itself, so Mhm. does it give any problem to his or career by using the only Alma certificate only by taking for job? No, so there are two things involved. Vishu, if you want to start as a start your career in Salesforce, then PD1 certification or any Salesforce certification is not a mandatory criteria to start a job in Salesforce. But yes, if you have a certification, it will give you a preference factor while applying for the job over other participants, right? But once you are into the Salesforce ecosystem, and if you want to move ahead in your career, then Salesforce PD1 certification or any other related certification will be required. Okay, okay, sir. Sir, is there any extra other charges for exam assistance from by Alma? No, exam assistance charges are everything is included as a course part. The exam fees from Salesforce will be charged by Salesforce only. Okay, okay, sir. Okay, sir. Yes. Uh, So Also, this is this certification applicable worldwide? So if tomorrow I'm going to some other country and I'm searching for a job, Salesforce certification is globally applied. It okay, is taken from USA, USA California, Salesforce headquarters only. okay, right. सर जिनका बैकग्राउंड आईटी से नहीं है उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना जॉब में? देखिए उत्पल, अगर ट्रेनिंग आप अच्छे से करेंगे तो कोई इशू नहीं आता है. We have trained multiple people from non IT background, and they have been successfully working in different MNCs across the globe. ओके सर, ओके. Sir, certification is mandatory to get a job, or only training will work for the to get a good job? Certification is not mandatory to start a job in Salesforce, but if you want to switch careers, suppose you are in your case you are a business analyst, right? But if you go with the certification, Arvinder, right? You are a business analyst in Java, right? No, sir, no. I am not doing any job right now. Oh, okay.
So, Havinder, if you want to start a career in Salesforce from scratch, certification is not a mandatory criteria. Sir, just Okay. for the info, I am asking that what is the fee for Salesforce for PD1 certificate? 200 USD, 200 200 USD US means dollars, approx $19,000. 19,000 rupees approx. 17,000, 17,000. 17, sorry, 17. Yes, but there is a hack available for that as well. So, what is the key is Salesforce conducts certification days every 6 months in a year, right? If you attend those certification seminar, you can get up to 70 to 80% discount Okay, on sir. Okay, sir. certification. Okay. So can you repeat it? I mean, which days that you mentioned? Certification days by Salesforce. Okay. Yes. Any more questions, guys? And or we can sum up this session for today. Okay, sir. No questions. Okay. Okay. Thank you so much, guys, for being such a lovely participants. So Thank you, sir. Thank you. after this session, I will send you a feedback form of the session and comeback detail. If you want to join the session from the 16th of January, you can let us know on the WhatsApp or you can call me directly. My name is Sachin. My number is available with most of the people. So you can then come back to me with your response, right? Okay, Thank sir. you so Okay. much, Sir, guys. sir, Yeah, one yeah, question I have. If yeah. we are joining a batch and, for example, we are joining the 2 p.m. batch and Mm. later on we want to change our batch uh, from day to morning, that Mm. could be happened? Yes, but you'll have to inform the training manager in Yes. advance, right? So Uh, they can align the modules. Suppose you were in a batch that and you completed two modules in that batch, right? yes. You completed programming fundamental and admin. So if you want to go and repeat admin and fundamental, that is your call. Otherwise, the training manager will have to find out the right batch which is having PD1 running in the third module running in the morning batch, right? So that is something with the collaboration of the training manager you can do. Okay. Okay, sir. सर Uh, सर इसमें प्रैक्टिकल सेशन भी होंगे क्या? प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों ये मिक्स सेशन होता है उत्पल. ओके ये सर. एक ओके. तरीके से इसमें दोनों चीज कंबाइंड होती हैं. इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एंड थियरी. ओके सर. ओके. Sir, our trainer will be the same like Ashok sir, who given the very good session, and I like the way and all the things, how he explain all the things, or it will be different. ट्रेनर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है विंदर. इफ द ट्रेनर इज अवेलेबल, अशोक इज अवेलेबल on by 16th, we'll have to check his calendar, but we have all the trainers at same pace working with us. All the trainers are equally capable. That is not an issue. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Okay then. ओके. Good evening, ओके. guys. थैंक यू Have सर. a great weekend. Thank you. ओके सर. Okay, guys. थैंक. thank ओके. you so much. थैंक यू सचिन सर. थैंक यू अशोक सर. Yeah, Thank very you. welcome. Very welcome. ओके सर. ओके. Okay, sir. Thank you. Good night. Okay, thank you, sir. Very welcome. Thank you. It was a great session. Thank you. बाय एवरीवन.